Hi everyone, very good evening. Just wanted to check if my voice is clear. A thumbs up would be very much helpful to understand that everyone is able to hear me. Good evening everyone. I just needed a thumbs up to make sure that you're able to hear me. That'll be a good starting point for me. Can someone please confirm if you guys are able to hear me out properly? All right. Thank you guys. Thanks Nishu. Thanks Swati. Thanks Tanvi. Thanks for that. Welcome guys. Thanks for taking out time for this event. We just heading to understand something that was the fever of the season. Most of the students nowadays have been talking about ACCA and they really wanted to understand what is this species is all about. That is the reason we thought it is all the more a reason कि आते हैं एक बार डिस्कस करते हैं एंड टू एंड समझते हैं कि ये कोर्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे इस कोर्स से रिलेटेड हैं particularly in the CA students this course is the talk of the season wherein they really wanted to know कि ये कोर्स उन्हें कैसे हेल्प कर सकता है and of course there are various other things that I really want to talk on this. They wanted to understand that and that is the reason we thought it is all the more good time to really step into it. आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैंडल करने की कोशिश करेंगे जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट हम आपको उन सब के आंसर इन दी बेस्ट वे पहुंचा पाएं. To start with, I just wanted to circle off in terms of what we would be covering today. I would first come up with the questions that I have. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस ये सारे मेरे से पूछते हैं और आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में होंगे. सो आई जस्ट थॉट टू पेन डाउन फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सर ACCA होता क्या है सर एंड ऑफ कोर्स सर इसके बारे में और बताइए सर. व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ACCA सर. सर इंडिया में इसकी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सर. सर व्हाई ACCA फॉर ए CA स्टूडेंट सर. सर हम तो CA कर रहे हैं सर. व्हाई ACCA कैन बी ए गुड मिक्स फॉर अस सर. व्हाई एंड हाउ ACCA इज डिफरेंट फ्रॉम CA सर. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस चीज को. And one thing that certainly would be there in your mind in somewhere or the other is सर कि ACCA में exemptions कितनी है सर. सर मैंने CA फाउंडेशन की हुई है सर, मेरी कितनी एग्जाम्शन है सर. सर मैंने IPCC क्लियर कर ली सर. सर मैंने IPCC क्लियर करने के बाद CA फाइनल में भी कुछ पेपर क्लियर कर लिए सर पर ग्रुप नहीं क्लियर हुआ सर. सर कितनी एग्जाम्शंस मिल सकती हैं. आते हैं अभी उस पर भी बात करेंगे. एंड देन सर क्या मैं बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट क्या मैं ACCA क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो भी डाउट बहुत बच्चों के मन में आता है. सर पास परसेंटेज क्या होती है ACCA की एंड ऑफ कोर्स सर कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस लगेगी, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है सर, कितनी महंगी होगी सर एंड व्हाट नॉट. ये सारे क्वेश्चन बच्चे जो मैं यहां लेके आया हूं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में हमारे तक आते रहते हैं और बार बार आते हैं. That was one of the reason we thought it does make sense कि हम इसके बारे में इन सब चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें, थोड़ा डिटेल में समझें एंड ऑफ कोर्स देन टुवर्ड्स द एंड अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मेरे पास वो भी लेके आइए, हम उसे भी आंसर करेंगे. और उसके बावजूद इस सेमिनार या वेबिनार के बावजूद अगर कोई और क्वेश्चन भी आपके पास आता है तो वीडियो के कमेंट में आप कुछ भी क्वेश्चन लिखिए. आवर टीम वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट एंड रिजॉल्व इट देयर एंड देन. तो चलें, शैल वी स्टार्ट ऑफ व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे. यस सर.
This is the agenda, my friend, that I have and I've crafted and drafted for you in terms of what we should be carrying and should be doing in this webinar. We'll start out with, of course, understanding as to what the ACCA is all about. We'll touch upon the scope of an ACCA. बहुत relevant है, बहुत important है. आप जिस स्टेज ऑफ करियर में हो, आपके लिए समझना कि कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन जो आपको नजर आ रही है, वो उसका स्कोप फ्रॉम दी जॉब अपॉर्चुनिटी स्टैंड पॉइंट, ग्रोथ स्टैंड पॉइंट क्या है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है. उस पर भी बात करेंगे. Why ACCA should be doing ACCA? Of course, we'll talk on that. The kind of exemptions, the most commonly asked question, we'll talk on that too. And again, how ACCA is different from CA. बहुत सारे बच्चे ACCA का नाम जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं बार बार कहीं ना कहीं से, बट क्या वो ACCA से काफी सेम है, नहीं है, कितना डिफरेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, आज हम उन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे. Then time and effort that is needed, and then of course we'll end up with the questions that we have to take up in the Q&A. I'm sorry for the bad throat, man, and I'm sorry you have to hear such a bad voice, but that's something I can't really help today with. Just bear me for some time. All right, moving on to what is ACCA. मैं बिल्कुल layman's terms में जाऊंगा बच्चे आज. I am not gonna be doing any kind of rote speaking over here. You have to understand, जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, जैसे यूएस में सीपीए है, द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एंड वी ऑल नो दैट. एज ए यूरोप में, particularly from the UK standpoint, we have ACCA. ACCA stands for the Association of Chartered Certified Accountant. ये एक अकाउंटिंग बॉडी है जो आपको यूके का, एंड ऑफ कोर्स आई वुड से प्रिडोमिनेंटली यूरोप का सीए बना देती है. आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन आ जाती है विच हैज एक्सेप्टेंस इन मोर देन 180 कंट्रीज. ACCA की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है. आप ACCA क्वालिफाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 180 कंट्रीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हो. इसीलिए इसको किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में बहुत सारे लोग ग्लोबल सीए भी बोलते हैं. बट द मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ही क्वालिफिकेशन है, बट यूरोप बेस्ड है और 180 कंट्रीज में वैलिड है, जिसमें बहुत हद तक सारी कंट्रीज कवर हो जाती हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस. चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो इंटायर यूरोप हो, या चाहे वो हमारा एशियन सब कॉन्टिनेंट हो, जहां पे भी इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रही है. ये तो हुई सर इसकी एक्सेप्टेंस की बात या इसकी डेफिनेशन की बात. अगर सर आप थोड़ा सा इसके करिकुलम के बारे में बताओ कि ये ACCA है तो किस पे बेस्ड है. देखो बच्चे, जब आप इंडियन सीए करते हो तो आप इंडेस पढ़ते हो, जो हमने पढ़ा था. जब मैंने सीए करी थी तो हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे. आज आप बच्चे इंडेस पढ़ते हो. बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम सर. जो यूएस गैप है वो सीपीए में पढ़ाया जाता है सर. सर वो यूएस अकाउंटिंग सीखते हैं सर. सर उन्हें यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने चाहिए सर, तो वो यूएस गैप पढ़ते हैं. बहुत अच्छी बात है सर. From the European standpoint, and we know that IFRS was being brought up in the Europe, was born in Europe primarily to deal with कि एक common accounting language होनी चाहिए जो हर कंट्री में काम आ सके, जिससे कंपैरिजन एनालिसिस आसान हो सके. ACCA IFRS बेस्ड क्वालिफिकेशन है. ACCA में आपको इंडेस नहीं पढ़ाया जाता है, यूएस गैप नहीं पढ़ाया जाता है, IFRS पढ़ाया जाता है. एंड ऑफ कोर्स जो और सब्जेक्ट हैं वो तो प्रिडोमिनेंटली सेम होते हैं, बट फ्रॉम द अकाउंटिंग या टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट पे आपको IFRS समझाया जाता है. टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट पे ऑफ कोर्स आपको यूके टैक्स समझाया जाता है, एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल टैक्स भी है. अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं. ये बात हुई बच्चे कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स करिकुलम किस पे बेस्ड है. तो हमने समझा ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है, ये भी ठीक है. हमने समझा ये IFRS बेस्ड क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है सर. अब आते हैं हम इसके स्कोप के ऊपर. काफी सारी बातें तो बच्चे हम इसकी स्कोप से रिलेटेड ऑलरेडी कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ दिस बीइंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज wherein more than 180 countries are right now accepting this as the chartered accountancy qualification,
which really makes this to be a globally recognized qualification. Huge opportunity for anyone, everyone to work for global companies. आप एक बार, and again, I have a slide that will come up just after this, but आप एक बार जाके खुद, and just go on the Google and type job opportunities for ACCA. In India, outside India, whatever you want to use, you can do that. But just type job opportunities or jobs for ACCA or ACCA jobs, whatever. You'll be astonished, my friend. You'll be astonished to see the kind of companies nowadays, how they are looking for ACCAs. Any and every job that you would see nowadays has the requirement to be set as CA/ACCA/CPA. Because they consider all of these three qualifications to be equivalent in terms of the content, in terms of the expertise, in terms of the depth that they need from a professional. And that's how this is really getting into the demand. You would certainly can get into the overseas kind of job opportunities through this. They certainly have an edge, because अगर आप कोई global qualification लेते हो और वो global qualification आपके पास है, तो of course your segue to get into the global companies certainly increases. Not that कि आप और other qualifications के साथ नहीं ले सकते हैं वो, but अगर आपके पास कोई global qualification है, तो that would certainly give you an edge. In demand, I can completely agree on that. As I said, just go and Google it out. You would find every third MNCs right now at this point in time is looking forward for an ACCA. सारे के सारे big fours में, and exceptionally, if you really circle down the PwCs, the ENYs, you would see that the demand for ACCA is really increasing multifold. The average salary, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे का आता है, सर कि चलो ACCA कर लिया सर, ACCA करके मुझे सैलरी कितनी मिलती है सर कुछ इसके बारे में बताओ। देखो बेटे, सैलरी ना बहुत हद तक आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, या आपकी अपनी प्रेजेंटेबिलिटी क्या है, अपनी कॉम स्किल्स क्या है, आपका इंटरव्यू कहाँ है, किस कंपनी में है, किस सेक्टर में है, किस रोल के लिए है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. But on an average, if I really have to give you a figure of a qualified ACCA, your salary can range anywhere between 4 to 8 lakhs as you start off with, and then it can go and increase as you would really work for it. जैसे आप काम करोगे, जैसे आप growth लोगे, you can certainly see a very different level of salaries as you may go and of course do the work that you're supposed to. But this is something I would say to be in the starting range what one can really expect for. Is that clear? Yes sir. ये स्लाइड बच्चे मैं लेके आया था ना, कोर्स मैंने आज कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने गूगल आउट करने की कोशिश करी. मैंने कहा मैं रीसेंट कंपनीज लेके आता हूं जो ढूंढ रही हैं ACCAs को. ये वो सारी कंपनीज हैं जिनके नाम आज की डेट में मुझे दिखाई दिए, जो कहीं ना कहीं ACCAs को देख रही हैं या चाह रही हैं कि उन्हें चाहिए ACCA एज ए टैलेंट फॉर देयर फाइनेंस इन हाउस और ऑपरेशंस पर से. I would certainly want you to Google this out, my friend, because जो आप खुद करोगे और जो आप खुद देखोगे उसको रिसर्च करने के बाद, that will certainly give you a very different level of satisfaction. Is that clear? Yes, sir. Alrighty. Now coming up to why ACCA for a CA or a qualified CA or a CA student. काफी कॉमन क्वेश्चन है बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में पूछते हैं और बहुत सारे फोरम से पूछते हैं. कोरा पे पूछते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आते हैं, हमारे स्टूडेंट फोरम है उस पर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका फ़ायदा क्या है, क्या एक CA स्टूडेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखो बच्चे, मैं ना इस पर एक स्टेप बैक लूँगा. मैं शायद आपसे ये पूछूंगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है. अगर आपका पर्सपेक्टिव बच्चे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद प्रैक्टिस करने का है, अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके लिए कोई भी डिग्री कोई मायने नहीं रखती सिवाय इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के. आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है.
बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर कर लेना अपना मन। अगर आपने इंडिया में रहते हुए प्रैक्टिस करनी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको कोई और डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीए करनी चाहिए और जय श्री राम। बट अगर आपका विजन प्रैक्टिस करने का नहीं है, अगर आपका विजन इज टू गेट इनटू ए जॉब, get into the opportunities that the MNCs have to offer, get into the various arenas of the modern finance that are really being thrown up with the advent of these MNCs, तो आपके लिए ऐसी क्वालिफिकेशन सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी certainly helps, no doubt on that. That has helped me too. But ACCA is a kind of qualification that is more flexible and more manageable, and that is the reason more achievable too. आएंगे उस पर भी, मैं क्यों बोल रहा हूं या मैं कैसे बोल रहा हूं। शायद जब मैं कर रहा था, अगर तब भी हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होती इन क्वालिफिकेशंस की, तो वी वुड हैव सर्टेनली ऑप्टेड फॉर दिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। यू सर्टेनली हैव द बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड, अगर कोई ग्लोबल क्वालिफिकेशन आपके साथ जुड़ती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक ग्लोबल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आप, और आपके पास एक इंडियन क्वालिफिकेशन है, ऑन द अदर हैंड आपके पास एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, डू यू रियली फील दैट ग्लोबल क्वालिफिकेशन वुड हैव सम एडिशनल वैल्यू और सम एज फॉर यू इन कंपैरिजन टू द गाय who would have only that Indian qualification? Answer is absolutely yes. I have seen that sitting on that side of the table when I have been working for the corporates for last I would say 2.5 decades. This certainly works. और वो आपके लिए भी काम करेगा अगर आपके पास global qualification है. Imagine a European giant opening up a center in India. Would he not appreciate somebody who has the ACCA? Imagine a Middle East giant जहां पे ACCA ही है. Would they not recognize an ACCA to be hired for them? Absolutely. Is this not happening? It is, my friend. It is just that we have to see it, we have to understand it, we have to appreciate it, and we have to take the right step at right point in time. It certainly gives you an edge. It certainly opens up your gate for the global job opportunities if if you are somewhat somewhere stuck in chartered accountancy because CA IPCC clear हो गया, but किसी कारण से CA final clear नहीं हो रहा है, बार बार देने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आपके पास दो रास्ते हैं बच्चे। या तो आप सिर्फ CA पे ध्यान देके एग्जाम देते रहिए और जब क्लियर होता है तब होता है, या आप उसके साथ कोई ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कीजिए ताकि आप शायद फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से टाइम थोड़ा सा बचा पाए कि चलो ये हुई तो बहुत अच्छा है सर, बट कोई ऐसा वेन्यू मिल जाए सर जो मेरी करंट एजुकेशन जितनी मैंने करी है सर उसको वैल्यू करे सर और मुझे आगे बढ़ने का मौका दे सर। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ ए माइंडसेट, देन ACCA इज द perfect qualification for you. It really recognizes what you have done till now, चाहे वो CA फाउंडेशन हो, CA IPCC हो, BCom हो, वो recognize करते हैं जो आपने आज तक किया है, उसको recognize करते हुए वो आपको आगे की क्वालिफिकेशन परस्यू करने के लिए कहते हैं, वो आप करते हैं। और अगर आप जल्दी क्वालिफाई करते हैं या कर लेते हैं तो एटलीस्ट जो आप टाइम वेस्ट कर चुके हैं इन सम शेप और फॉर्मेट, उसको आप कवर अप कर लेते हैं। We'll come on to that in a while in terms of what I'm talking from the exemption standpoint. What is important for you as a CA student is that if somewhat in some way or the other you feel that you need an alternate course of action which can really help you speed up your career aspiration, which you have not been able to do with the CA for whatever reason, there is all the more reason to get into a qualification like this, which values what you have already done and can really flare up or capitalize on what is already being achieved by you, and you can achieve the rest and be there. Is that clear? Yes, sir. It certainly creates an alternative career opportunity. As I said, it is a CBE exam qualification, the computer-based exam, and I can tell you why I have written over here.
many of the CA students who have not been able to give exams in last two years kind of thing because of the COVID and the other issues that we have had, ACCA had the computer-based exam right from the beginning. Since they had it, the people who were doing ACCA, they did not waste any time. They gave exam there in that particular month, they cleared it and they moved on. It is, I would say, to an extent, the pandemic proof qualification, which can certainly help you excel as early as possible. Is that clear? Yes, sir. How my ACCA is different from my CA, sir? How is this different, sir? सर बहुत कुछ सुनते हैं सर आप संक्षिप्त रूप में सर नहीं संक्षिप्त में नहीं सर, डिटेल में बताओ सर ACCA CA से डिफरेंट कैसे है सर। तो चलो, आपने कहा और सर ने माना, आगे चलते हैं। ACCA CA से डिफर इन सब एरियाज में एंड विल कवर देम ऑल अलोंग। नंबर 1, सीए में सर 20 एग्जाम होते हैं सर, अप्रोक्सीमेट 20 एग्जाम है आज की डेट में। सबको ग्रुप सिस्टम में क्लियर करना होता है सर। एक क्लियर तो एक भी रहा तो सर ग्रुप रह जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रेस्ट इज द हिस्ट्री, वी ऑल नो दैट। ACCA has 13 exams. You can choose the subject for which you want to give the exam in that particular buckets. So they have 3 buckets. You can choose what exam you need to give in that bucket, and of course you can clear these exams one by one. CA is based on the Indian laws, Indian accounting standards, Ind AS for that matter. IFRS ACCA is based on the IFRS. ACCA is based on the global taxation or UK taxation, as I just said. Group system, we have already spoken. You have to give 4 exams at a time in chartered accountancy. In ACCA, you can give 1 exam at a time and move on. We understand that, sir. Pretty clear, sir. No problem, sir. Coming on to the modality. CA is a paper-based exam. We all know that. May and November are the months in which it happens. We know that, sir. That's done and dusted, sir. We understand that, sir. ACCA happens 4 times in a year. You can give March, you can give June, you can give September, you can give December. It's a computer-based exam. You can give exam from your home. आर्टिकलशिप, सर आर्टिकलशिप भी होती है ACCA में? बिल्कुल होती है बच्चे, वहां भी होती है। आपको CA में आर्टिकलशिप शुरू करते हैं आप जब IPCC क्लियर कर लेते हैं। IPCC और फाइनल के बीच में आपको सारी अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी होती है। जबकि अगर मैं ACCA की बात करूं तो आप पहले, अगर आपने ACCA करने से पहले भी कहीं जॉब की हुई है, या ACCA क्वालिफाई करने के बाद भी अगर आप करते हैं, या उसके साथ भी अब करते हैं, तो वो सब चीज़ आर्टिकलशिप में कवर और इंक्लूडेड मानी जाती है। एंड मोर सो फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑलरेडी आर्टिकलशिप करी हुई है, आप ऑलरेडी आर्टिकलशिप CA की कर चुके हो, तो वो आर्टिकलशिप आपके लिए कंसिडर करी जाती है फ्रॉम द ACCA स्टैंड पॉइंट। आपको कोई एडिशनल आर्टिकलशिप की जरूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। कमिंग ऑन टू मैथ्स, इट इज मोर टू सर्कल बैक विद सम ऑफ द बेसिक, आई वुड से फच्चास और द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद मैथ्स। क्या इंपॉर्टेंट है सर ACCA के लिए? सर CA में तो मैथ्स चाहिए होता है सर, CPT लेवल पे। क्या ACCA में भी चाहिए? नहीं चाहिए। Maths is not the dependent variable in the ACCA. You do not need to have maths for the purpose of giving your ACCA as compared to CA. Is that clear? Yes, sir. Coming on to, my friend, the course structure. ये मैं जरूर डिस्कस करना चाहता था ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो ACCA में होते हैं, जस्ट टू गिव यू सम कोरिलेशन, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता रहे कि हाँ किस तरह का कंटेंट या किस तरह का मेरा करिकुलम होने वाला है। ACCA में बच्चे 3 लेवल होते हैं। जैसे CA में आपके 3 लेवल होते हैं, ऐसे ACCA में भी 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल है बच्चे नॉलेज लेवल, सेकेंड लेवल है स्किल लेवल, एंड थर्ड लेवल इज प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल पे बच्चे 3 एग्जाम होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि अगर मैं लेमनिस्ट टर्म्स में बोलूं तो वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा सब्जेक्ट है बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्टिंग का बहुत छोटा सा भाई है। स्टार्ट है कॉस्टिंग का बच्चे,
कॉस्टिंग की जो बेसिक लेवल की नॉलेज होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है, तो बच्चों को ये फाउंडेशन लेवल पे कवर करना होता है। और थर्ड सब्जेक्ट है बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि वी ऑल अंडरस्टैंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर, नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सर. I love you, my friend, for that. That is what the financial accounting is all about, and that is something the knowledge level is all about. Knowledge level आप क्लास 11th ऑनवर्ड्स ही दे सकते हैं बच्चे, आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं होती है. सॉरी फॉर दैट. इसी कारण से जो बच्चे ACCA क्लास 11 से शुरू करते हैं वो बाय द एज ऑफ 19 और 20 मैक्स तब तक वो ACCA क्वालिफाई कर चुके होते हैं. And if you really scan through on the net, you'll get to see these people, my friend. If you go on LinkedIn, you'll get to see these people who are being qualified at the age of 20 as qualified ACCAs and now working in various multinationals. Is that clear? Yes, sir. One thing I really want to talk on over here is all the foundation level exams are multiple choice exams. 4 options में से एक option choose करनी होती है, sir. There is nothing to be written, there is nothing to be explained. Is that clear? Yes, sir. Coming on to the skill level. We have a subject called corporate and business law. We all understand that, sir. The very basic business laws. We all know that, sir. Then we have the performance management. That is the costing. You have the taxation. You have the choice of choosing the UK tax or the global tax. You have the financial reporting. Sir, financial reporting is in our blood, sir. We know that, sir. Financial reporting, we all understand that, sir. But this is IFRS-based financial reporting, not to be forgotten. All right. Then you have the audit and assurance, sir. So audit, we know, sir. There is nothing new for us, sir. We all understand that. Then you have the financial management. We know that, sir. Sir, isn't that something very similar to what you have already done? Yes, this is very similar to what you have already done. This is all the more same, my friend. The only thing that you need to understand is how examiner has been asking question on that in ACCA, and that is something you really need to learn. This is the CBE based exam, we all know that, and this is MCQ plus subjective question based exam. So you would get some MCQs in this and you would get some subjective questions in this, in which you need to calculate, you need to write, and so on and so forth. But anything and everything that happens is in the computer. Is that clear? Yes, sir. Moving on to the professional level, the final level, right? Yes, sir. You have 2 mandatory subjects over here, my friend. Mandatory means these 2 subjects are something you cannot get away with. You have to give these 2 exams. I'm sorry for that. One is strategic business reporting, which is the elder brother of the financial reporting. So final level financial reporting is nothing but the strategic business reporting. And then you have the strategic business leader exam, which is a very, very smart exam. They really test your business leadership skills. It basically covers up various areas from all over the ACCA and of course from the management world. Excellent piece that you really need to learn. Then you have a choice, my friend, that you need to choose from the 4 optional choices that you have. You have advanced financial management, you have advanced performance management, advanced taxation, and advanced audit and assurance. From these 4, you have to choose 2 subjects, whatever you like. Choose it, give the exam, clear it, and move on. Is that clear? Yes, sir. Is there a confusion? No, sir. The only thing you need to know is that professional level exam is all subjective question exam. There are no MCQs over here. You have to be ready for writing, calculating, and so on and so forth. They would give you a case, at times cases, to really work on and give your perspective, give your understanding, give your solution onto that particular situation. Is that clear? Yes, sir. Moving on to exemption, the fever of the season, sir. Sir, this is the talk of the town, sir. So we really want to understand, sir. Sir, बहुत सुनते हैं सर कि ACCA करने के लिए exemptions मिलती हैं सर. आज तो बता ही डालो सर कौन कौन से exemption मिलते हैं. तो चलो चलते हैं. बच्चे, अगर आप BCom करा हुआ है, आपने
आपने बीकॉम क्वालिफाई कर लिया बच्चे, बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं तो ग्रेजुएट हो गया सर। ACCA भी आपको पैट ऑन द बैक देता है, ACCA भी वो रिकॉग्नाइज करता है और ACCA कहता है सर अगर आप बीकॉम हो ना सर तो ये पहले 4 पेपर माफ सर। बीटी नहीं देना सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देना सर, सर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ भी नहीं देना सर। पहले 4 पेपर की छुट्टी, 5वें पेपर की से तैयारी शुरू करो, फटाफट से पेपर दो एंड मूव ऑन। एंड अगेन गेस व्हाट, 5वें से शुरू तो करना है बट जरूरी नहीं है 5वां पहले दो। आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दे दो, टैक्सेशन दे दो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दे दो, ऑडिट इंश्योरेंस दे दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दो, कोई दे दो, जो आपको ठीक लगता है उसकी तैयारी करो, वो दो। स्किल लेवल का कोई पेपर उठाओ, तैयारी करो और पेपर दो। देयर इज नो मैंडेटरी सीक्वेंस ऑन टू इट। इज दैट क्लियर? यस सर। ये बच्चे बीकॉम वालों के लिए एग्जेम्पशंस हैं। सर मेरी बीकॉम नहीं हुई है अभी सर लेकिन मेरी सी आईपीसीसी हो गई सर। मैंने फटाफट से आईपीसीसी ग्रुप 1 दिया था सर, वो भी हो गया, ग्रुप 2 दिया था सर, वो भी हो गया। अब मेरे लिए क्या है सर? मेरे लिए कुछ है एग्जेम्पशन? तो चलो आपने कहा, सर ने माना, आपके लिए 5 एग्जेम्पशन है। आपने तो सी आईपीसीसी क्लियर कर ली सर, तो आपके लिए 5 एग्जेम्पशन है। आपको ACCA रिकॉग्नाइज करता है जो आपने किया है और आपको 5 एग्जेम्पशन दे डालता है। कौन कौन सी सर? पहले 3 तो छुट्टी, नॉलेज लेवल तो देना ही नहीं है। BT, MA, FA से छुट्टी मिल गई, आपने वो देना ही नहीं है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अब स्किल लेवल पे क्यों किया आपने? आईपीसीसी क्लियर किया हुआ है तो आपको टैक्सेशन भी नहीं देना है और आपको ऑडिट भी नहीं देना है। बाकी जो पेपर बच्चे हैं बच्चे, उसमें से चुनो, तैयारी करो, बढ़ो आगे। ACCA ड्यूली रिकॉग्नाइज करता है बच्चे जो आपने एफर्ट या अचीव एज ऑन डेट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन स्टैंड पॉइंट किया हुआ है। एंड बेसिस दैट दे गिव यू द एग्जेम्पशन कि आपको ये एग्जाम इस करिकुलम में देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट दे फील इज दैट यू हैव ऑलरेडी read through these papers and you have given these papers, you have cleared these papers, so they appreciate that. Is that clear? Yes sir. अच्छा सर, अब ये बताओ सर मैंने तो आईपीसीसी कर लिया सर और मैंने तो ग्रेजुएशन भी कर ली सर, मेरे दोनों काम हो गए, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा सर? तो चलो एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपको 6 पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी बेटे। अगर आपने बीकॉम भी कर लिया और आपने सीए आईपीसीसी भी कर लिया तो आपको 6 पेपर की एग्जाम्पशन है। आपको पहले 3 नॉलेज लेवल के एग्जाम नहीं देने हैं और स्किल लेवल पे भी आपको कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ नहीं देना है, टैक्सेशन नहीं देना है बच्चे और ऑडिट भी नहीं देना है। तीनों से छुट्टी बच्चे। 3 पेपर रहते हैं स्किल लेवल के, क्लियर करो एंड मूव ऑन। इज दैट क्लियर? यस सर। सर मैंने आईपीसीसी भी क्लियर कर लिया सर मैंने बीकॉम भी कर लिया सर मैं सीए फाइनल के पेपर दिए जा रहा हूं सर, पर क्लियर नहीं हो रहा सर, फंसा पड़ा हूं सर, क्या करूं? अरे भाई, कभी कॉस्टिंग के अंदर 40+ मार्क्स आए फाइनल में? आए सर, बिल्कुल आए। कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग के अंदर 40 से ऊपर मार्क्स आए? बिल्कुल आए सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऊपर आए 40 से? नहीं आए सर। अच्छा भाई, चलो आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि कॉस्टिंग के अंदर मार्क्स आए 40+? यस सर। आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मार्क्स आए 40+? यस सर। तो चलो वो 2 भी एग्जाम्प्ट, आपको वो 2 एग्जाम भी अब नहीं देने ACCA में। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आए ना आपके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दो। अरे सर मेरे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आए सर, मैंने तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दिया था, उसमें भी 40+ आ गए सर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी माफ, वो भी एग्जाम बच्चे, वो भी नहीं देना। What I'm trying to build out over here is that if you have cleared your IPCC and your BCom, you're eligible for 6 exams exemption. But if you have given your CA final and have got marks of more than 40 in any of the subjects, that exam is also exempt for the purpose of doing ACCA. Please do not forget that.
That is the level of appreciation ACCA really offers for you to really put in onto the effort that you have already done in terms of achieving what you have achieved. And that is something you really need to relish on. Is that clear? Yes, sir. सर मैंने सीए फाइनल भी कर डाला सर, मैं तो सीए क्वालिफाई हो गया सर, अब क्या सर? बच्चे 9 एग्जम्पशन से ज्यादा तो मिलेंगी नहीं. Maximum exemptions that one can get from the standpoint of exam is 9. क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी 9 एग्जाम्पशन से ज्यादा नहीं मिलती हैं. आखिरी के 4 एग्जाम तो बच्चे देने ही देने हैं, और वही एग्जाम्पशन आपको भी मिल सकती हैं अगर आपने सीए आईपीसीसी किया हुआ है, प्लस आपने किसी फाइनल सब्जेक्ट के अंदर 40 प्लस मार्क्स लाए हुए हो. ग्रुप नहीं भी क्लियर हुआ हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगर उस सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स हैं, then you are eligible for these exemptions. बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर. exemptions क्लियर होती हैं ACCA की? बिल्कुल हो जाती हैं सर. कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं है सर. This is the most sought after topic from the ACCA exemption standpoint, and I really wanted to spend time to make you understand कि किस तरह की कैसे exemptions आपको मिल सकते हैं. Is that clear? Yes, sir. Moving on to my friend time that is required for completing ACCA. I can say this is something that is lot dependent on you. I've tried giving some of the average times over here, my friend, just to give a color in terms of, how would that look like. Ideally, a student can complete ACCA at the age of 19 or 20 if they have started in class 11, 12th, which is a very, very common case nowadays. Students have starting this from the class 11th and 12th, and they are completing this before the age of 20, which is astonishing. An average student takes at least 3 to 4 years for completing this course, which he starts from the scratch or start from the start. But a CA student who has already cleared, a lot of exams, let's say who already has the background and has cleared the IPCC, he would take 1 to 1.5 years for completing all of the exam. You can give 1 exam at a time, but there is no one who is stopping you from giving 2. You can give 2 also. You are used to giving 4, my friend. Giving 2 is not a big deal for you. But giving 1 or 2 exam in per quarter is very easy. 1.5 year, you will be out as an ACCA. For a CA qualified, I would say it generally takes less than a year to complete all the 4 exams. And that's what has been the average. Isn't that too small a period to have a qualification which is being recognized in, I would say, more than 180 countries, which is a globally recognized qualification? Yes, sir. Isn't that astonishing and something to be really relished upon? Yes, sir. And that is the reason, my friend, you would find students now really choosing this path and really walking this, I would say, from their career standpoint. And that is what we really want you to have a thought on and see if this can work for you. Any confusions, any doubt, you can certainly reach out to us. There are teams. The Smart Learning team is certainly working for you day in and day out and answering anything and everything that you may need. They'll be more than happy to pick it up and, of course, respond back. I really want to open up over here and really now keep my mouth shut to give you some time to ask questions, my friend, anything that you may have. I had a lot to say, which I just covered in terms of giving you a perspective as to how one should be thinking about ACCA, what all things are there in the ACCA, and so on and so forth. I'll be happy to take any questions that you may have. Pratham says, what is the procedure of registration? Pratham, you can certainly reach out to the team. They would be they can certainly help you out on that. There are some, I would say, basic documents that one would need. Let's say your, your ID proof and of course your qualification, scripts.
They would need your mark sheet as well as your the passing certificates. You need to just click a photo of that and send it to the team. They would be able to register you, and of course you can start your journey from there and then. There are no exceptional documentation requirements, just the basic of your educational transcripts, and of course your basic ID proof, your Aadhaar card will work over there. So there is no exceptional process as such. सीए फाइनल में एफएम है कि एसएफएम है? सर एफएम है, एसएफएम है, तो एसएफएम में अगर आपके 40 मार्क्स हैं तो वो कंसिडर होंगे आपकी एएफएम के लिए, सॉरी आपके एफएम के लिए. अगर आपके एसएफएम में 40 मार्क्स आए हुए हैं तो यू आर सर्टेनली एलिजिबल फॉर द एग्जम्पशंस ऑफ द एफएम एट द स्किल लेवल. Any question, guys, anyone may have, I'll be happy to answer that. You just have to exhale out your queries, my friend. We're more than happy to pick it up. Priyanka, Tanvi, Neetu, anything that you have, Nishu, more than happy to answer. Manpreet says, what is the fee structure? From the fee standpoint, I would say just refer the the website. You'll get all the details from the fee, from the fee standpoint. The only thing I really want to mention over here is that this, beside being a global qualification, the fee that you would see on the total basis is not that high. Considering this is a global qualification, fees is not that big, my friend. It is a very much affordable fees for everyone, and that is the reason it is getting very prevalent from the Indian subcontinent standpoint. And that is something you really need to relish. There is nothing exceptional from the fee standpoint. Just go and refer to the website. You'll get all the details. What will be the case of the MCOM exemption? BCom MCOM exemption is same issue. There is no further exemption being given to the MCOM. So the 4 exemptions that are there in BCom are there for the MCOM too. Anybody else, guys? Anything anyone may have? Any confusions, any queries, any concerns? I'll be happy to pick it up. Manpreet says, how can we get the coaching? You just have to, as I said, you have to reach on to us. You can go on to the Smart Learning website. They would be more than happy to, all the courses are being listed out there. They'll be more than happy to help you in terms of, you getting the registration done, you getting all the sessions being there for you for the purpose of going through these courses, learning these courses and moving on. So there is nothing that should stop you. Just reach out to Smart Learning Destination and they'll be more than happy to support you.
Last call out, guys. Any questions that you may have before we really wrap up? Any confusions, concerns, any last questions that I can answer before I really wrap up? Alrighty, since we do not have any question, let's just wrap this up. Thank you very much, guys, for joining in. I would again say that if you have any confusions, any support that you may need, you can just reach out to us, reach out to the Smart Learning team. They'll be more than happy to pick it up and answer anything and everything that you may need. See you then. For now, this is Pankaj Chingra signing off.